Hey, hi everyone. Thank you so much for joining. This is another episode of Primary Market Chatter. This is like our ninth episode now, September first week IPO. So we'll be covering seven IPOs today. जो दो मेन बोर्ड आईपीओ हैं सबसे पहले उनकी बात करेंगे और उसके बाद पांच जो एसएमई आईपीओ हैं उनकी बात करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फन सेशन. वी माइट ऑल्सो टेक अ फ्यू क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू बजाज का जो शेयर होल्डर कोटा है उसमें कैसे क्या काफी डाउट्स आ रहे हैं उसमें. सो वी माइट वांट टू फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग दिस इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड डेवलपिंग स्टोरी है. सो we'll cover some of the doubts with respect to that as well in the end. But that's the agenda for the episode. I just want to highlight that we are not SEBI registered research analyst and this is our read of the company. हम तन्मय, रोहित एंड मी what we do is हम हर हफ्ते अपनी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद शेयर करते हैं फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव. कंपनी कैसी लग रही है, कंपनी क्या करती है और उसका आगे क्या व्यू है. सो फील फ्री टू डेफिनेटली डू योर ओन स्टडी एंड डू नॉट टेक दिस ऑन फेस वैल्यू. जो हमारी रीड है उसको सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं लें, जबकि अपनी भी स्टडी करें. उसके साथ ही हम प्रोबेबली पहली कंपनी की तरफ मूव करने वाले हैं. बट बिफोर दैट जस्ट वांट टू हाईलाइट अ कपल ऑफ थिंग्स फॉर एवरीवन. फर्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू एनी आईपीओज दैट वी आर डिस्कसिंग, गो अहेड एंड पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स. हम उन क्वेश्चंस को लेंगे while we are discussing them. What we'll not be able to do is to be able to take any questions with respect to any listed companies जो already list हो चुकी हैं वगैरह. उनके बारे में हम जनरली बात नहीं करते हैं. So उसके बारे में कोई हम वो नहीं कर पाएंगे. बट डेफिनेटली जो भी आपकी लिस्टेड जो भी आईपीओ की बात हो रही है उसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड एंड पेस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन. वील टेक दैट एंड वील कवर दैट एज वेल. उसके अलावा ये अगर आपका कोई भी आईपीओ मिस हो गया है तो हम ये जो स्पेस है ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं. मैं अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे ऊपर डाल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ पोस्ट में. इट शुड बी विजिबल इन द नेक्स्ट 30 seconds. गो अहेड एंड शेयर follow on YouTube as well so that you can get a feeler and you can kind of listen to these IPOs at your IPO reviews at your own leisure. एक लास्ट चीज, आई अंडरस्टैंड टुडे इज मंडे एंड not the best day, but we are trying to fine tune and we'll probably come back to the weekend schedule that we have. We understand कि सबके लिए वो weekend वाला schedule best चलता है. But it's just that it's difficult to tune time for all three of us, so that's why it's been slightly difficult. But with that, मेरा जो YouTube channel है वो भी ऊपर हमने डाल दिया है. So go ahead and follow that YouTube channel as well. इस पे भी मैं कल सुबह तक ये जो space है ये डाल दूंगा ताकि आप उस पे ये स्पेसिफिक आईपीओस का रिव्यू भी सुन सकते हो. Having said that, we'll probably start with Baazar Style, which is the first Mainboard IPO. It's a IPO from Rare Enterprises investment group. Rekha Junjunwala is a big investor in it. So maybe Tanmay, do you want to very quickly start and cover Baazar Style? Yes, so Baazar Style Retail Limited. First of all, this is the company's name. Okay, so the trademark and brand name for this company is Style Bazaar. So this company is one of the largest value retail chains in Eastern India, especially in the states of West Bengal, Assam, Bihar, Odisha. So this company has 168 stores and in 146 cities. So what this company does? So this company has 10 to 15 private labels. It doesn't make its own garments. It has the designing engineers. So what this guys do is they give the designs, they outsource from the private labels and sell under their stores. Okay, and this company doesn't have any franchising model. All the stores are owned by them. So this company is basically raising 835 crores, out of which 148 crore is going to be fresh issue and 687 would be OFS. Let me just say one thing, that this company has already raised 37 crore pre-IPO placement. So the figure I gave of 148 crore fresh is including that 37 crores. Okay. So this company will repay the debt of 135 crore out of 188 and it will do a GCP of 50 crores out of after repaying the 135 crore debt. The company will be left with small working capital. It will be majorly a debt-free company only. So what this company is doing is this company is mainly catering to the segment between income segment of 3 to 5 lakhs. So this now I'll come on its financials. So this company did a revenue of 788 crores
in FY23 and PAT of 5 crores. In FY24, this company did a revenue of 973 crores and PAT of 22 crores. So what you can see is the revenue growth is around 30% and the PAT has drastically increased. So this is due to the operational leverage of the company. So what now this company is coming at a market cap of 2900 crore. If you just go on the PE calculation, the valuation seems extremely exorbitant. 132x is the PE of this company. But I just went and calculated its forward earnings. So first of all, I'll just say that calculating forward earnings for this company was extremely easier. So it was not like, very tough. So anyone can do and just make the simple maths. Its FY25 earnings, if revenue is coming at 1245 crores and PAT is coming at 42 crores. And if you just go at FY26, revenue is roughly 1540 crores and PAT is roughly 74 crores. But if you still go and calculate the PE, FY25 it's at 69 times and FY26 it is at 39 times. So what we can see in this IPO is the valuations are on extremely higher side and the pricing would have been done much better. So it doesn't seem a much good candidate for the listing. And so I personally feel this company will list around 15% kind of premium, small premium. But actually, I am personally bullish on this company. I'll share some reasons. Now, there are many different government initiatives in various states. Like they are giving some freebies kind of things. They are distributing the money for the poor and different kind of category groups. So what these guys have an aspiration to spend that money, especially. So this company has 95% plus stores in tier 2, tier 3 and tier 4 cities. So they are actually catering to the lower income group segment. So what this segment has, they have an aspiration to spend the money, which will give them the feel of the tier 1 or the premiumization, and the stuff or the garments they are going to buy out of those stores are going to be in their price range. Okay, so means they are getting a premium feel with the price range of their capacity. So this company has a good business model. They are catering to an extremely good segment. This company can easily grow 25% plus CAGR for next 5 years. So I feel this company is a core portfolio stock. It can do extremely well in the long term. I'll just read out the investors in this company. Rekha Rakesh Jhunjhunwala, Intensive Group, Chandurkar Investments, Haldiram's owner Manohar Lal Agarwal, Keval Kiran Clothing, Kiran Benchowati of Ami Organics, and the anchor book was also extremely good. HSBC, Motilal Oswal, Helios, Optimics, Volrado, and some more domestic mutual funds. So I feel this company is a proxy of the rural consumption, increase the discretionary spending. So this company can do extremely good for on the long term purpose. But I don't feel this company is going to show much fireworks on listing. I feel it will deliver a listing of less than 20%. More than 20% would be tough. I will rate it like 12 to 18% listing gains, a range 12 to 18%. I'm more inclined on this IPO for a long term. The people who are ready to take it as a 25-30% CAGR for next 5 years in the portfolio should bet on this company. Got it. Thank you, Tanmay. मेरे एक दो question है. Can you probably mention some of the peers, and again, tell me if I'm probably saying wrong, but would Zudio be a peer at a very, very high level? Like this will be aspirational Zudio, you know, how do you kind of look at that scale? So I think the income segment which Zudio caters is 8 lakhs to 12 lakhs. Means if I went on a mass level, high level, and this Style Bazaar is catering to that 3 to 5 lakh group segment. So if you go in the Zudio, you will find a range of between 500 to 5,000 or 500 to 3,000. And this Style Bazaar is mainly catering between 250 to 1,200. This is the segment. So I feel the competitors of Style Bazaar can be V2 and VMart. I think V2 has a good, reasonable exposure in Odisha and Bihar. In some 20-30% of the presence of Style Bazaar, V2 is their exact competitor in those geographies. But what I can say, a week back, I saw an interview, I think it was of V2 or VMart, I'm not remembering. But what the promoter said that we are not able to get that expected demand and we are going like 15% kind of growth. But what this company
management is seeing and what we can see on the numbers front, this company can grow 25 to 30% CAGR for next 5 years extremely comfortable. So I feel this company will get very good valuations. And what means, many investors run behind the hot themes like we will go into solar, we will go into space, we will go into a semiconductor data center. But I feel this retail segment can do extremely well for next 5 to 10 years, and this segment can get those multiples of 80, 100, 120x. So I feel this company will get, and that means I can see this company having a $1 billion valuation in the next 3 years. So peer group can be V2 and VMart, and there are two more players, unlisted one. I feel Zudio cannot be compared. Got it. But that's a big statement, right? Current valuation around 3,000 crore hai. Hmm. Billion dollars will take it like to 8,500 CR, right? In 2, 3 years. So, I uh, feel 3 साल में $1 billion पे रहेगा 8,300 पे. got it. That's very, very interesting. With that, Rohit, do you have anything to add on Style Bazaar? Yeah, just one thing. See, this segment, looking at a PE multiple, or if you just look at a PE multiple, prima facie, 100, 120, all of these players, whether it's a Trent or a V2, or all of these guys are either negative or they're at 100 plus PE. But PE is not the right metric here, especially not current PE at least, because a lot of this business model requires you to set up capex in the form of stores to grow. So depreciation is always going to be high. So either look at cash flows, a sort of cash flow multiple, or look at an EV EBITDA multiple. So when I had done this on an EBITDA multiple, you can say that it is at a 20% sort of discount to this V2 and VMart. So I don't see, I agree with Tanmay that the short-term pop is not going to be more than 15-20%. This guy is also growing a little slower than some of the peers. But the long-term story is intact. Just don't get confused by this 100, 120p. That's not relevant in a business model like this. Look at either the cash flows that are being generated or look at the EBITDA, EV EBITDA multiple. Yeah, just to highlight what you need to look at when a business is coming in, जो business काफी ज्यादा capex कर रहा होता है, तो उसमें depreciation वगैरह ज्यादा होगी क्योंकि business नई चीज अपनी बैलेंस शीट पे जा रहा है, फिर उस बैलेंस शीट पे डाल रहा है, फिर उसको ओवर 3, 5, 6 years depreciate करेगा. तो इसलिए जो आपको प्रॉफिट दिख रहे हैं वो पेपर प्रॉफिट्स नहीं है, वो एक्चुअली उसमें से डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है. सो दैट्स व्हाट रोहित इज ट्राइंग टू से कि लुक एट ईवी बाय एबिटा व्हिच इज अ बेटर मल्टीपल फॉर कंपनीज हु आर स्टिल डूइंग कैपेक्स. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है रोहित और तन्मय टू यू. तन्मय, मे बी दिस इज मोर ऑफ फॉर यू. आई वाज लुकिंग, इट्स 850 CR अप्रोक्सीमेटली इशू, जिसमें से अराउंड 600-650 करोड़ तो ओएफएस है. जो फ्रेश इशू है उनका एग्जैक्टली क्या purpose है? Is it working capital or is it majorly They are capex? knocking off the complete debt from the books. डेट फ्री हो जाएंगे ये पोस्ट लिस्टिंग, और सिर्फ जीसीपी डेट और जीसीपी, बाकी कुछ नहीं है. Got it. तो उसका भी थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली गेन मिलना चाहिए, ना, पर राइट? क्योंकि एक चीज मैंने देखी इसमें, तो इनका अगर आप रिलेटिवली इंटरेस्ट कॉस्ट देखो ना, तो 8% है रफली. तो मतलब आप ना, अगर इनका इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट का अगर आपने अमाउंट निकाला ना पीएनएल में से, तो कुछ तो भी निकलता है. आई थिंक 45 करोड़ कुछ तो भी है. तो आप ना उसमें से इनकी जो लीज लाइबिलिटीज है वही 35 करोड़ है. मतलब ये टेक्निकली साल का 12 से 13 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट देती है, और ये अभी रीपे करेंगे 2 महीने बाद. मतलब ये साल में ये अराउंड 4.5 करोड़ 5 करोड़ बचाएंगे, क्योंकि इनको 50 लाख 1 करोड़ भी उनको वन टाइम एक्सपेंस होता है आपका डेट रीपे करने में. तो अगले साल अराउंड 12-13 करोड़ बचा लेंगे. बट अगले साल अगर इनका पैट अगर अराउंड 40 करोड़ हो रहा है, तो मतलब ठीक है. मतलब ये करंट फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट कॉस्ट में इतना ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा, बट FY26 में 12-13 करोड़ का अराउंड डिफरेंस दिखेगा. एंड कंसिडरिंग द बिजनेस इज कैश जनरेटिंग बिजनेस, मतलब ये जो मतलब क्या है, इन्होंने 2 स्टोर से स्टार्ट किया था 2014 में. तो अब ये 162 स्टोर पे है. जो मेरा निकल रहा है प्रोडिक्शन, हर साल 18 से 22 स्टोर निकालेंगे अराउंड. got it. That's very helpful. With that, we'll probably close our read of Bazaar Style Retail IPO. Seems good for long term and decent enough short listing pop for short term.
एक बार ये हम स्टाइल बाजार आईपीओ कवर कर रहे थे और इसके बाद गाला की तरफ जाएंगे। एक बार गाला प्रेसिशन इंजीनियरिंग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम एक बार रेट भी करने की कोशिश करेंगे दोनों में से आईपीओ हमारे हिसाब से कौन सा बेटर है फॉर बोथ लिस्टिंग गेन्स एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। बट जस्ट वांट टू हाईलाइट, मे बी सेट इट अप फॉर रोहित, गाला प्रेसिशन एक बहुत ही छोटा आईपीओ है, फ्रॉम व्हाट आई वाज सीइंग अराउंड 170 सीआर का आईपीओ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड द कंपनी इज इन कैप गुड्स, मैन्युफैक्चर्स प्रिसीशन कंपोनेंट्स जैसे कि डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं, कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं, वो सब बनाती है। बट मे बी विद दैट आई विल मूव इट ओवर टू रोहित टू स्पीक अबाउट गाला प्रिसीशन। Thanks, Manish, for finally giving me a main board that is smaller than many of the SMEs that are coming these days. So Gala Precision is an interesting company. It's actually a pretty solid company. They are a precision component manufacturer. As Manish said, that they make technical springs. That's the segment they started out with. They started with a real niche, which is disc springs, which is a very, very small market actually. They didn't move to coil springs, and now they have added on fasteners as well. Fasteners is a $100 billion market globally. There are a lot of public companies in India as well as at this stage. But today fasteners is like 20% of their business. 80% comes from springs. They do everything, from design to manufacturing to prototype, everything they do in-house. They have their own machinery. The interesting thing is where these components are used. So one of the sectors or I say one of the large sectors where these components are used, especially these springs, is in renewable, especially in wind and hydro. It's also used in mobility. It's used in automotive. It's used in railway. So these products are used in several of, it's like a proxy to some of the hot sectors that all of us sort of know today. Today, about 37% of the business is export. Rest of it is domestic. Coming back to Gala, so apologies for that, I lost power at home. So I was just mentioning that they sort of started out with this disc springs, which is a niche product, and now they're moving into more and more mainstream products, but they're still trying to focus on components that have some criticality. Already, if you look at their market share in disc springs, it is very high. They have like a 10% market share, which is quite big for a business that is actually not very large, 200 crore in revenue. But now they're moving to, the larger and larger markets, which is a good strategy also because they've got an entry point, a hook with a customer, and then they're able to cross-sell a different range of products. One interesting thing is about 32% of their business comes from the renewables space, both in India and globally. So there will definitely be a lot of tailwinds for this business. The other thing that I found interesting is this business itself has a lot of entry barriers. It's difficult for other people to do what they do because this vendor qualification process is quite long. It can take up to 2 years for a vendor to get qualified. And generally customers would not really change vendors also. For them, 1-2% of margin is not as important as the criticality of that product being of that high quality and of having been rigorously tested and so on. So you have very sticky clients, and it kind of shows in their revenue growth also over the years. Today they have a couple of factories in this place called Vada, which is in Maharashtra. They're at about 70 to 85% utilization, depending on the SKU. Motamoti, you can say they're at about 80% utilization, but they are raising funds, for capex, about 50 crore, plus another 10 crore of internal accruals, to set up another plant, outside Chennai or just off Chennai. So totally today, you can say that their, total revenue capacity is around 250 crore. They're doing around 200 crore. And with the new capex, it will come from 250 crore to about 360, 370 crore. So they have a decent room to grow, at least for the next couple of years, at the rate, at least that they are growing. They're also going to use some of their funds for debt repayment, which will have a nominal bottom line impact of about 3 crore or so. In terms of the financials, their numbers are pretty good. They did 200 crore last year, growing at around 22% from last year to this year. I'll cover this particular number in the context of its peers also. They did around 24 crore PAT last year if you remove exceptional items, which was up from 14 crore the previous year. So if you just look at the P&L, it looked like they've gone from, I think, 23 to 22. Whereas they've actually gone from 14 to 24 because of some one-time exceptional items. Solid cash flows. I couldn't find really anything negative on the balance sheet front. There's no direct peers in the space that they are in, which is the niche, that spring sort of space, but you do have peers in the fastener space and other precision engineering components, like your Rolex rings, Harsha engineers and so on. And everyone trades at a 35 to 45
up to 50p multiple. Gala is coming at a 30p. They have better growth than the peers. I mentioned that they've grown 22% last year. If you look at most of their peers, at least in the last year, they haven't really grown that fast, or even grown at that much at all. So I feel this actually is leaving quite a bit on the table. I know GMP is around 50%, so that's probably where this company will open and will probably settle. It's a very small issue, 170 crores, so allotment is not going to be easy. But I definitely will try. If we get allotment, nothing like it. Probably one small point is just also on the anchors, largely or SME anchors. I think given the size of the issue, most of the big anchors would not show up. So it was mostly SME anchors. Had this one interesting one where the promoter group of Sharda Energy is one of the anchors, but they do show up in anchors from time to time. That's my overall read. Good company, niche company, interesting segment with good tailwinds coming at a decent valuation. So I feel this is something one can apply. Not sure if one can chase this on listing, but definitely from an apply perspective, it looks good. Got it. Rohit, do you have any guidance? I understand how's the sector doing? What do you think? Because anything manufacturing is flying right now. So now that you're saying that the peers haven't done that great per se in the last 1 year, any forward-looking your idea of how that should work per se? Tanmay, do you want to Yes, एक्चुअली ना मतलब मुझे पर्सनली ये कंपनी पे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. मतलब पहली बात तो आई जस्ट सॉ दैट दिस कंपनी हैज एक्सेप्शनल operational leverage. I will just recall some of the clientele names and what work this company actually does. So this company has a relationship of 12 years from ABB Germany. Okay, ABB Germany, not ABB India. So for the global products of ABB, this guy is the only manufacturer of a particular components. I think it is a spring coil. So this company caters to world's largest wind turbine manufacturer. This has a clientele, more good clients like GE Vernova. मतलब इनका क्लाइंटल बहुत अच्छा है, स्नाइडर है, शिंडलर है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं. तो इनका जो बिजनेस का जो क्रिटिकलिटी है ना बहुत हाई है. और मतलब द प्रमोटर इन एन इंटरव्यू ही सेड कि हमारा कैपेसिटी एक्सपांशन के बाद रेवेन्यू कितना होगा. ही डिडंट गिव अ नंबर टू द कैपेसिटी एक्सपांशन. ही जस्ट सेड कि हम कितना रेवेन्यू कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी इज सेइंग दैट वी कैन इजीली कंफर्टेबली डू 22 to 24% CAGR. इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ऐसा हुआ कि ये कंपनी अगले 2 साल में 200 से 300 करोड़ का रेवेन्यू करेगा. इसके ऊपर सिंपल 16 to 17 पैट मार्जिन लगा लो, आपका क्लियर व्यू आएगा इसके ऊपर कि अगले 2 साल में 40 करोड़ का पैट करेगा. What I personally feel in this company that this company actually do not have a comparable listed peer. Harsha Engineers or you have Rolex, all these are in a different segment, and a product made by Rolex can be given by Harsha at a 10% lower rate, but a product made by Gala cannot be supplied by any different your guy, Scheffler can do few things, but I think 30% of the revenue of Gala comes from the products which are only guys to make the product in India in the listed space. So I feel this company can get extremely high multiple. मतलब ये ना करंट अर्निंग में 50-60 का मल्टीपल आराम से लेगा. बहुत नीश कैटेगरी है, क्लाइंटेल अच्छे, प्रमोटर्स I honestly felt extremely genuine. I'll just I will just speak a point on the anchor book. There was an interesting name in the anchor book which few guys missed, which the person is known to do some miracles. तो मतलब 45 करोड़ मैंने 2 साल का फॉरवर्ड पकड़ा. तो आई फील दिस कंपनी कैन ऑलमोस्ट मतलब 3 गुना हो जाएगा ये 2 साल में, इजीली हो जाएगा. मतलब if I get this company at a 30% premium post listing, I'm just going to buy it. Got it. Tanmay has been sharing all ranges today, like kahan pe buy karna hai, which we usually don't, but yeah, that's a plus. So we are still trying to evolve on how we want to share, but that's our read with respect to Gala Precision. SMEs की तरफ चलते हैं. We already covered Boss Packaging, but before that, wanted to check with you both, and maybe I'll also tell my strategy in terms of the allotment, because it's very tricky. बाजार स्टाइल है, उसमें GMP comparatively कम है, but थोड़ा सा बड़ा issue size है versus Gala. So if someone had to apply one for listing, and if someone had to apply one for keep one for long term, can you probably tell me which one would that be?
I'm sure, I'm assuming like it's slightly difficult choice because both of them are good. But yeah, if you guys can do your opinion and then I can share my opinion, and we can for a good move to SMEs. हेलो हेलो मनीष भाई आई जस्ट लॉस्ट माय नेटवर्क फॉर 2 minutes. क्या पूछा था? मैंने ये बोला कि कैन यू probably just mention which company to target for listing gains and which company to target for long term from both of them. If you had to pick one at gunpoint, which one would that be? हम्म, मतलब लिस्टिंग इन के लिए एसएमए में मैश, मेन बोर्ड में गाला, लॉन्ग टर्म के लिए बाजार, ऑल थ्री हैव देयर ओन स्पेशलिटीज. बट ऑनेस्टली अ ब्लेंड ऑफ थ्री कैन, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसमें अलॉटमेंट भी मिले और गेम भी अच्छा लगे. तो ठीक है यार, मतलब मैं तो सेकेंडरी में ज्यादा खेलूंगा, बट आई विल गो मोर फुल फोर्स इनटू, मतलब बाजार में जाऊंगा, फिर बाजार का पैसा मैश, नए मैच कॉन्फ्रेंसेस में जाएगा, गाला में भी लगा दूंगा. Got it. SMEs पे भी आ रहे थे, but thank you for covering that. Rohit, do you have anything to add? So I generally optimize for allotment probability. I think if you take probability of allotment into listing gain, Bazaar will probably be slightly better. Gala is going to be crazily oversubscribed. So give it a shot. If you get it, it will definitely give a better gain and is a more interesting long-term play. But very, very, very hard to get. So I would go, if I had just funds for one, I personally would choose Bazaar just because there's a higher chance of allotment. Got it. I would also probably follow a similar strategy. I'll probably try and put a HNI application in Bazaar and a retail application in Gala. But Gala again would be very difficult to get because it's a very small size issue. With that, maybe we can move to SMEs. And in the interest of time, Tanmay, do you want to go ahead and speak about boss packaging while I try and figure out what's happening with Rohit's connection? Okay, I'll go with Boss Packaging. So Boss Packaging is basically a manufacturer of machineries which are used in packaging related stuff like capping, filling, self-adhesive stickers, web sealers, etc. So this company is raising around 8.4 crore rupees, out of which they intend to do a capex of 3.3 crore, which will increase their capacities to manufacture these machines. 3 crore is for working capital and 2.1 crore for the GCP, which will also have the issue expenses and related things. So this company did a revenue of 10.3 crores in FY23 and PAT of 1 crore. And FY24 they did a revenue of 12.2 crore and PAT was the similar 1 crore. So what I can say is their capacity utilization is at 90%, but the shift that they are doing is just one shift of 8 hours. So if they start the second shift, the capacity utilization is not going to be a big thing. It can be done proper. They have enough capacities, and they are also increasing the capacity from this IPO proceeds. So this company is seems actually it's not a bad company. It looks good, but what are the issues with this company are the imports which are done from the Southeast Asian countries and the China are bringing the pricing power down, and actually Indian markets are flooded with China imports of these machines. So this company is actually very good. Means what this company needs is the industry tailwinds and the government support. If in case in future, if any duties or any restriction on the Chinese imports on these machines are done, this company can do extreme miracle. But if you went on the valuation side, it's at around 28 times, so which seems a little bit higher. And means this company is not, means when we read this company, the premium is zero and the LM is FedEx. Worst LM ever. I don't like this LM at all. I just see this LM as a red flag for any IPO. But when I saw the companies, I had a mindset while looking this company कि क्या packaging का company, क्या इतना मतलब अच्छा रहेगा. But I saw it's into machines and the fundamentals are not bad. Okay, it's a relatively good company. But the thing is, like, if government doesn't come to support this sector, the company will be like a normal average kind of company. 1 crore का 1 crore 10 लाख, 1 crore 10 का 1 crore 30 लाख, तो इतना कुछ खास ग्रोथ नहीं होने वाला. So I feel, and this company means what I can say, this company at a high level is
this company hasn't left any good scope for listing in. It can be a good long-term bet, but there are ifs and don'ts. If there are import restrictions from government, this company will do well, but we don't know when they are going to happen, because government of India is speaking from 2015 that we will do make restrictions, import duties on the imports of packaging related machines, but they haven't till date. So means company is not bad, but just give it a skip. मतलब मेरे पास पॉइंटर नहीं कि क्यों मुझे इस आईपीओ में लगाना है, और क्यों अवॉइड करने के लिए भी पॉइंटर नहीं, बट लगाने के लिए भी नहीं है. बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर आईपीओज आर लाइंड अप. गॉट इट. थैंक्स तन्मय फॉर योर रिव्यू. मैंने बॉस पैकेजिंग बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, सो कंपैरेटिवली मेरा कोई खास रिव्यू नहीं है, बट वांटेड टू चेक. रोहित, आर यू बैक? कैन यू स्पीक समथिंग? Yes, I'm back. I hope you can hear me. Yeah, I can hear you. Good. You want to go back and speak on today's Gala Precision? I will do that. I'll do that. Probably just before that, I just mentioned one thing on Boss Packaging. Even I thought the company was somewhat interesting, but at least recently in the SME market, we're seeing that either companies have extreme interest or no interest. Even decent companies that are cheaper than peers, if there isn't interest, they just keep falling. So be very, very careful right now. The mood is such that the ones that are very hot are incredibly hot, and those that even seem cheap, seem reasonable, if there isn't interest, they'll get destroyed. So just time to be a bit cautious. Tanmay has also set it up with respect to हमने Mach Conference की बात की, so maybe we can start with Mach Conferences. कंपनी क्या करती है, कब IPO आ रहा है, and then probably take it forward from there. We already covered Boss Packaging, so 3 कंपनियों की बात कर चुके हैं. चौथी कंपनी की बात करते हैं. Mach Conferences जो कंपनी है, IPO ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन. नहीं, IPO ओपन होने वाला है फॉर सब्सक्रिप्शन. 6th is the last date, so probably it will open soonish. I think 4th को खुलेगा. But it's a big size IPO. Around 125 CR company raise कर रही है, out of which 75 CR is a offer for sale. बहुत बड़ा offer for sale है कंपनी में, and only 50 CR is going to go to the company. 50 CR का ही fresh issue है, book build issue है, BSC पे आएगा interestingly. And जो promoters है उनके पास अभी भी 70% रहने वाला है after IPO. So they'll still hold a big company, big proportion. And comparatively for SME, it's a huge issue, right? Like 473 CR company का market cap होगा on IPO price. So it's going to be a big issue, and company काफी ज्यादा premium भी कमांड कर रही है in the market. So एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है. So it's a Noida based company, event management की कंपनी. आप ऐसा मान लो कि जैसे अपन वेडिंग प्लानर्स होते हैं, बट वेडिंग प्लानर्स फॉर योर इंडस्ट्री साइड, कॉर्पोरेट साइड के जो इवेंट प्लानर्स होते हैं, कंपनी वो है. इट्स एन इवेंट मैनेजमेंट स्पेस. इसको स्पेस को ना माइस बोलते हैं. माइस स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स, इंसेंटिव टूर्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस. तो उस स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है. काफी बड़ी कंपनी है, एंड उनके अपने क्लाइंट हैं. और उसके अलावा वो क्या करते हैं, जब कोई भी बड़े कॉर्पोरेट को अपना एनुअल प्रोग्राम करना होता है, रिट्रीट करनी होती है, या फिर इंसेंटिव टूर्स करने होते हैं, या फिर बड़े कॉर्पोरेट को अपने डीलर्स को, ऑथराइज डीलर्स को कोई टूर पे लेके जाना होता है इंसेंटिव के फॉर्म में उनको, तो वो कंपनी इनको अप्रोच करती है. ये उनके लिए पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं आउट टू आउट सर्विसेज. तो इसमें जैसे सर्विसेज होती हैं कि किस जगह पे ले जाना है, क्या इवेंट कराना है, डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, फिर वो डेस्टिनेशन पे कैसे जाएंगे, वो एयर फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करना, वहां के जो होटल वगैरह हैं वो बुक करना, कम्यूट जो है वो बुक करना, वीजा वगैरह का जो पूरा फॉर्मेलिटी है वो करना, किसको क्या रूम मिलेगा, क्या लॉजिस्टिक्स होगा, टिकट बुकिंग होगी, फॉरेक्स जो चाहिए होगा. सो आउट एंड आउट सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू organizing the events for corporates is what this company does. And it's been like इनकी specialty, I would think of it as कि ये काफी कम इवेंट करते हैं साल में, बट बड़े इवेंट करते हैं. लाइक इन द लास्ट ईयर they did 90 events, which on face doesn't look like a lot for a company of this scale. सिर्फ 90 इवेंट ही किए थे उनने, पर ये अक्रॉस लाइक इनका 70% रेवेन्यू में देख रहा था एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल है. एक्सपोर्ट इज नॉट द राइट वर्ड. बेसिकली वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे क्लाइंट्स को ले जाते हैं, और अराउंड 30% रेवेन्यू जो है वो
डोमेस्टिक है, कंपनी ने कई सारे इवेंट्स कराए हुए हैं, लंदन में, मसूरी में, बैंगलोर में, साउथ कोरिया में, कई कई जगहों पे इवेंट कराया हुआ है. जो प्रमोटर है अमित भाटिया, ही लुक्ड वेरी स्मार्ट, ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20 years, सो काफी ज्यादा अंडरस्टूड द स्पेस. बट अगर मैं वापस से एक बार आता हूँ, 90 जो इवेंट मैंने बोला कराया, तो जैसे मैं एक इवेंट देख रहा था, एक्सिस बैंक का एक इवेंट हुआ था, MDRT, $1 million राउंड टेबल, जिसमें अराउंड 700 लोग इन लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी. सो 700 लोग की वो जो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी इस जनवरी में, वो मैच कॉन्फ्रेंस ने कराई थी, और इसका एस्टिमेटेड इवेंट की वैल्यू जो थी वो अराउंड 19 करोड़ रुपए का ये इवेंट था, जिसमें फिर ये कंपनी ने ऑर्गेनाइज करके कराया हुआ था. सो दैट्स द स्केल एट विच दे ऑपरेट. काफी बड़ी कंपनी है, एंड इन कंपनीज में क्या होता है, आई फील ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, क्योंकि तुम as you are doing more events and bigger events, the expenses do not go in the same proportion, क्योंकि expenses वही है जो आपका headcount वगैरह का है, कोई raw material का expense नहीं है पर से. But having said this is a extremely difficult, extremely ops heavy business, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वगैरह ये पूरा ऑप्स का धंधा है, और ऑप्स का धंधा काफी कंपैरेटिवली मुश्किल होता है. एक दो जो रेड फ्लैग नहीं बोलूंगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू हाईलाइट बोलना चाहूंगा. तो जैसे इनके जो क्लाइंट्स हैं, मोस्टली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के क्लाइंट्स हैं. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का इनको मेजरली काम मिलता है, एंड लाइक जो टॉप 1 कस्टमर है, which would probably be from a banking company like let's say Axis Bank और HDFC होगा, उससे इनका 46% रेवेन्यू आया इस साल में. सो 46% रेवेन्यू, आधा कंपनी का रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आ रहा है. तो और प्लस क्या होता है कि यू कांट से राइट कि कब क्या चीज बुरी लग जाए उस कंपनी को, या फिर क्या बिगड़ जाए इन टर्म्स, लाइक वो रिलेशनशिप अगर बाय एनी चांस खराब हो जाते हैं, ऑल्दो दोज हैव बीन मेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट्स अ मोस्ट डेफिनेट एंड अ बिग रिस्क in terms of the company having that risk of कस्टमर कंसंट्रेशन. और अगर आप देखोगे तो टॉप 5 जो कस्टमर हैं, तो कंपनी के टॉप 5 कस्टमर से 82% रेवेन्यू आता है. सो ये बस वही है कि जो मेजर इवेंट्स कराते हैं वो इन्हीं इवेंट से कराते हैं. सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ सेज कि अगर आप इनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखोगे, तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अराउंड 50-55 पीपल है, जिसमें से अराउंड 28-29 लोग ऑपरेशंस वाले हैं. सो इट्स अ वेरी वेल रन बिजनेस आई फील. But can it grow per se at the scale at which they are already operating? Can it continue to grow? That's one question which I continue to have from here. अब अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी ने ना 2022 में जो रेवेन्यू किया था, अराउंड 23 CR का रेवेन्यू किया था. 2023 में 141 CR का रेवेन्यू किया था, और 2024 में 240 CR का रेवेन्यू है. तो आपको दिखेगा कि 23 CR से 240 CR रेवेन्यू हो गया, 10x रेवेन्यू हो गया. बट दैट्स बिकॉज कि 2022 में कोविड पीरियड था, तो ट्रैवल्स वगैरह आउटडोर हो ही नहीं रहता कुछ. एंड प्रमोटर ने भी ये माना अपनी कॉल में, जो एक वीडियो था, कि अ लॉट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रैवल. कॉर्पोरेट्स में क्या है, 2-3 साल से फंक्शंस हुए ही नहीं थे, राइट. तो जब एक बार करना है तुम्हें 2-3 साल में, तो यू विल गो बिग, राइट, यू विल स्प्लर्ज वॉट एवर मनी यू वांट. सो दैट मे बी वन फैक्टर टू लुक एट कि ये कितना सस्टेनेबल है ओवर टाइम, बिकॉज रिवेंज ट्रैवल बाय डेफिनेशन विल स्टॉप, राइट. तुम वापस से बैक टू नॉर्मल प्रोबेबली आ जाओगे. सिमिलरली अगर मैं इसका प्रॉफिट की बात करूं, तो कंपनी ने 2022 में लॉस किया था. मैं बाय द वे मैच कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूं, समवन हैज जॉइंड इन बिटवीन. 2022 में कंपनी ने लॉस किया था 2.5 करोड़ रुपए का, 2023 में 8 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और 2024 में इस साल 26 करोड़ का प्रॉफिट किया है. Company has been growing over and over again, but yeah, so that's my read of the business per se. और कंपनी जो है वो लगभग 18 के पीई पे आ रहा है. जो पीयर्स हैं वो एक्सिकॉन इनने अपना पीए दिखाया जो 29 के पीई पे है, टचवुड जो है वो 45 के पीई पे है. सो कंपैरेटिवली कंपनी का जो कंपनी का जो है वो उसने थोड़ी बहुत जगह छोड़ी है विद रिस्पेक्ट टू पीएस. बट हैविंग सेड दैट, नीड टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू ए कस्टमर कंसंट्रेशन, बी व्हाट आर द ग्रोथ प्लान्स की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी ने दिखाया है कि वो bookmyyatra.com करके एक B2C चैनल खोलना चाहते हैं, जिसमें वो बेसिकली जो कस्टमर्स उनके थ्रू ट्रैवल कर ही रहे हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो मुझे थोड़ा सा फार फेच लगा in terms of like the objective. I feel it's away from their core expertise. Their core expertise is managing relationship with 1 to 5 people. It becomes difficult to manage that relationship with 10,000, 15,000, 10 lakh people per se. So it's a very difficult and far-fetched
growth objective, at least that's what I could feel. उसके अलावा company also wants to diversify into religious tourism, but that's the theme of this sector. Exicom ने भी काफी सारे अभी बीच में acquisitions किए हुए थे which were respect to religious tourism, so I felt maybe this is with respect to that. So be careful on that as well. But seems an interesting company. Just one last thing from my end, LM जो है वो Beeline है. मार्केट मेकर स्प्रेड एक्स है विच इज रिलेटिवली अ गुड कॉम्बो मार्केट में डिसेंट रेप्यूट है बट दैट्स माई रीड अगेन एट 18p दिस सीम्स लाइक अ गुड कंपनी टू अप्लाई लिस्टिंग गेन होगा और एक और चीज अगर आप प्रमोटर का इंटरव्यू देखोगे आई डोंट नो हाउ मच यू कैन टेक इट बट ही वेंट अहेड एंड सेड कि मेरे H1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे so take it with a pinch of salt. I just want to communicate that information per se. But yeah, that's my read of Mach Conferences. Tanmay and Rohit, do you have anything? I feel you have explained pretty well. मतलब टेक्निकल पॉइंट्स में कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा बट मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा. मैं तो मतलब यार जाऊंगा मतलब इसमें फुल फोर्स. Got it. एक और चीज मैंने शायद वर्ड यूज किया कि ऑपरेटिंग लेवरेज आता है जैसे जैसे ज्यादा क्लाइंट होंगे. दैट माइट नॉट बी ट्रू क्योंकि जो भी इवेंट के एक्सपेंसेस हैं एयर टिकट्स हैं वगैरह वो प्रोबेबली कंपनी विल स्टिल हैव टू स्पेंड ऑल ऑफ देम बट व्हाट आई मेंट बाय दैट वाज कि जो लेबर वगैरह होगा वो उसी रेट पे नहीं बढ़ेगा राइट क्योंकि जो ऑपरेशंस के 25-28 लोग हैं वो 4 इवेंट भी करा लेंगे प्रोबेबली 8 भी करा लेंगे इज व्हाट आई वांटेड टू से बट इफ यू फेल दैट समथिंग विच is wrong in that sense, maybe feel free to discredit. This was again my naive view. But that was with respect to Mach Conferences. We can now move forward to the next issue. Next issue की बात करते हैं. So maybe we can. I'm just checking which is the next issue that we have to take. I was too occupied with talking about Mach Conferences, but yeah, next is a big issue again. Jeyyam Global की बात करते हैं. So again, this company makes Bengal gram. चने की कंपनी है अभी काजू की कंपनी बहुत चली थी कंपैरेटिवली एलिया वाज इन न्यूज सो दिस सीम्स लाइक अनदर कमोडिटी बिजनेस एट अ वेरी हाई लेवल एंड द कंपनी इज रेजिंग लाइक 81 CR. आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज OFS as well but yeah Rohit do you want to go ahead and talk about Jeyyam Global and explain to us what the company does and what was your read of it? Yes, thanks, Manish. Actually, I'm not even sure how to pronounce it. I thought it was Jeyyam. So I'm going to say Jeyyam Foods. As you said, we had Kaju recently. We also TB icon. So somehow we seem to be getting food processing or commodity processing businesses now coming in a row. So what these guys do is they are a manufacturer, processor, and supplier of chana. They do, just plain sort of cleaned chana. They do fried gram. They also do besan, which is the sort of milled and ground flour under this Jeyyam brand. They are mainly a B2B business today. They sell to distributors, retailers, hotels, the usual supermarkets and so on. But what they want to do is they want to enter into the B2C space. They want to enter through sort of Chaneka products. But if you look at the list of products that they want to do, it is, it goes into the typical ready to eat, ready to cook, spices, masala, all of that is there in their sort of plans. They have almost some 90 products, as they said. They've done R&D and they've done, customer testing and so on. In just for chana itself, they basically process it. So you take the raw chana, you clean, dry, roast, grind, whatever needs to be done to process it to that fried gram state or to the besan flour state. So there is some value addition over there. So it's not simply trading. They have decent market share, at least in South India. They claim to have, to be the largest chana, organized chana player in South India. Most of their business comes from Tamil Nadu, little bit. And in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, these are places where this, fried gram especially is used in like chutneys and so on. So there's a lot of use case there and that's where they're kind of focused on their business. They do want to move to Central India as step 2. And that's one of the reasons, why they're raising the fund. What they did just before the IPO is they set up a factory in Andhra Pradesh, which is where one of the sources for chana is. And what they claim is they found that it helps reduce a lot of their operational costs. And so they want to replicate that model where they go near the source, whether it be in Maharashtra and Madhya Pradesh, depending on where the source of that raw material is, and try to set up local units there, local production units there, which, as per them, helps them with their operational cost.
Now, there were few things that I found a bit off in this business. So firstly, if you just look at what they have said as their the capacity and their capacity growth and their production growth, the volume growth that they've done. From last year to this year, they have grown 20% only at a processing level. They did, I think, some 50,000 MTPA. That's come to about 65,000 MTPA or something. I don't remember the exact number, but it was around a 20% growth. 20% growth in processing, somehow they have shown a 70% year-on-year growth in revenue. And if you look at just their growth in the chana category, they've actually shown 120% growth in revenue. So there's something I'm not able to exactly understand what they have left out in the RHP. Maybe what they have left out is just the fact that most of their business growth is coming from trading, that it's just raw trading, product trading, and not really from value addition, which I found very weird. But there is no way to correlate the fact that their volume has only grown 20%, but their revenue has grown by such a crazy number. They also seem to have very, very high attrition. Many of their key managerial persons, I think, four people, which is like 160% of their key MPs have left last year. Many of the skilled workers have left. So it's a little unclear what exactly is going on there. Probably the third thing is, this is actually a 3 promoter group company, or 3 different promoters who look after different things. And while the promoters do seem to be capable individually, every promoter is doing so many different things. Each promoter group has, if you listen to them, they talk about how they are just in about every industry, from financial services to obviously these kind of various food products, to like every possible industry they seem to have some place. So I'm not sure what their role will be once this company actually lists and it goes public. How much time will they spend in something? They have so many different concerns, and it kind of showed maybe that's the reason for this attrition. So it's a little. I found a few red flags in this company personally. The numbers are good. They have 630 crore in revenue last year, 65% year-on-year growth. Their margins have expanded a little, but it's barely 2 to 3%, 2.5%, I think. Their operating cash flow has been consistently negative. So yeah, I found this an okay business. They've also given some guidance for this year. They've said that they're running at around 65 crore per month kind of rate, and they think they can get to almost a 2.9 to 3% PAT for the year. So if you look at it, if you view it just on a multiple basis, they've come at a 19p for 24, and maybe you can say a 12, 13p for 25. None of that is particularly interesting if you view it as a trading business. If you view it as a processing business, sure, they get slightly better Ps. But the ultimate story for this business, which is what I think people will have to believe, is what is the long-term view here, which is to move into B2C. They've covered so many, or they've set up this R&D process for so many different B2C products. There are a bunch of, public companies in this space. Can they use their existing distribution network to actually set up a B2C business? It's a question. That's the story that people would be betting on. If they are able to do that, they will have 2 things. 1, they will get a higher multiple, and 2, they will also be able to significantly increase their margin. So that's a double sort of benefit in terms of just multiple expansion. So if that can play out over the next, I would say it would at least take a couple of years before B2C is anywhere remotely meaningful for their business, then you can see decent growth and decent, I'd say, value growth in if you buy a share of that company when it lists. But yeah, without that story, this company looked like it did not have the substance needed to really command such a high premium. One peer, we've seen Alia, that trades about 30-35p. I think TBI Con is at 40p plus. So if you view it as a processor with significant expansion of capacity and with the ability to move into other things, maybe this company can get a slightly premium, can come at a slight premium. But I just feel with this business, there are some red flags here. So I'm a little cautious. When I started out, I was quite excited about this, but I saw a few things that made me a little cautious. So for me, I'm somewhat neutral on this business. That at least is my read. Manish, Tanmay, if you have anything else to add. I'll take 2-3 minutes on this company. So basically, I'll not talk on the technicals of this company. Okay, Rohit has covered pretty well on that. So this promoter group, this is, I think, 4th listed company from them. The first one was this Jeyyam Spices Limited. After IPO, the company did well for 2 years. Then the stock got badly dumped. I think उनका stock अब 50 रुपए से 10 रुपए आ चुका है. Okay.
The second company was Shanti Guru Industries की company है. Actually, by the way, this Shanti Guru Industries is an SME of market cap 40 crore only. This company owns, I think, 20% stake. मतलब 50-60 करोड़ का current value, listing के बाद 100 करोड़ रहेगा. तो and the third company was Astamangalam Finance. So that is into an NBFC, one is into spices, one was a retail, which is now a shut company. So I couldn't understand that what these promoters are trying to do. And I also I saw that few people are badly promoting this IPO. मतलब मैं अगर मेरा तो ऐसा पर्सनल साइकोलॉजी या फिर फिलोसॉफी है कि यार अगर चीज अच्छी होगी ना तो बिना बात के बिक जाएगी. ओके, अगर चीज खराब है तो उसको बेचना पड़ेगा. तो इफ उनको अगर बेचना पड़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज है. आई विल नॉट टॉक ऑन द बैलेंस शीट. मतलब मुझे थोड़ी चीजें समझ नहीं आई. जो मैंने प्रमोटर का इंटरव्यू देखा वो ऐसा लग रहा था कि लीड मैनेजर ने स्क्रिप्ट बना के दी, ये जाके बोल रहे सिर्फ ट्रेडिंग बना दिया रेवेन्यू अच्छा दिखाने के लिए. आई नो दिस कंपनी मतलब इट इज गोइंग टू गेट प्रमोटेड बाय गुड पीपल टू लिस्ट वेल, बट लिस्टिंग के बाद क्या होगा वी डोंट नो. 2 साल बाद क्या पता ये पेनी स्टॉक बन जाए. तो सिंपल यार, लिस्टिंग इन के लिए लगाओ, बाद में भूल जाओ काइंड ऑफ आईपीओ ये. I would probably take one thing on this. Maybe I don't understand how it works. Just want to make sure कि मेरा रीड थोड़ा सा नाइव है इस टर्म्स में. बट मैं देख रहा था कि कंपनी ने जो लिस्टिंग के लिए एक्सपेंसेस दिखाए हैं इसमें वो 24 लाख रुपए दिखाए हैं. 81 CR का इशू है. सो कंपनी कह रही है कि उसका टोटल एक्सपेंस जो होगा लिस्टिंग कराने में अपनी कंपनी को वो 0.3% होगा. 0.3% में अंडर राइटिंग भी हो जाएगी, 0.3% में लीड मैनेजर की फीस भी भर जाएगी, रजिस्ट्रार की फीस भी भर जाएगी, मार्केट मेकर की फीस भी भर जाएगी, जो भी हमें पब्लिसिटी करनी है वो भी हो जाएगा. सो वो बात लाइक जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, एंड अगेन दिस इज नो कंपैरेबल, बट जो वो ट्रेवल्स एंड रेंटल्स वाली कंपनी आई थी विच वाज ऑन द अदर स्पेक्ट्रम ऑफ इट, उसमें लगभग 13% जो एक्सपेंस था वो जा रहा था विथ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लिस्टिंग एक्सपेंसेस. इस कंपनी का 0.3 जा रहा है. So from what I understand, roughly it should be somewhere around at least north of 6%. So that was a huge thing which probably needs to be asked कि सर 24 लाख में कैसे कर रहे हो. हमारी भी कई सारी कंपनियां हैं जिनका बहुत भला हो जाएगा अगर 24 लाख में इश्यू लिस्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली. तो but yeah, that's one interesting point which I wanted to highlight, and I want to mention that a lot of it is settled under the table. I understand that part, but it's just that which I wanted to highlight. So there are certain things which need to be careful, and as they say, if he can cheat for you, he will not mind cheating from you. And again, maybe this is me going to a absolute different tangent and I shouldn't be saying it. So this is my read. I don't understand the business completely, so I'll kind of keep mum on that with respect to that, but that's our read. Tanmay, Rohit, if you guys have anything, or we can probably move forward. We are running slightly behind to the last issue, which is Namo E-Waste. मतलब यार मैंने ये पॉइंट एक्चुअली मिस कर दिया. मतलब ना मैंने कंपनी ऑनेस्टली इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं है. मतलब जो पॉइंट्स मुझे देखे कि ये बुरे हो सकते हैं वो बताया मैंने. बट यार मतलब जो मैं जानता हूँ कि जो एसएमए आईपीओ जितने बड़े होते जाते हैं उनका इशू एक्सपेंस रिलेटेड टू द परसेंटेज ऑफ द आईपीओ कम होते जाता है. बट जो मतलब रफ बोलूं मैं तो छोटे आईपीओ का अराउंड 12-13-11% जाता है. क्वालिटी एसएमए जो छोटे होते हैं उनका 10% जाता है. इसलिए कंपनी का एक्सपेंस अराउंड 8% होना चाहिए था. तो मतलब अराउंड 6-6.5 करोड़ तो बनता था इसका इशू एक्सपेंस. तो 24 लाख में कैसे कर रहे हैं? मतलब सिर्फ मेन बोर्ड में भी 3.5-4% होता है मीडियम साइज इशू पे. तो ये कैसे कर रहे हैं? डोंट नो यार. मतलब लगाने का क्यों है इसका आपके अपने पास कोई मतलब आंसर नहीं है. बट क्यों नहीं लगाने इसके बहुत ज्यादा जवाब है. बट ये तो दे देगा मतलब लिस्टिंग है, ठीक है. Yeah, listing in to दे देगा. Like that's the and but yeah, it seems that they are doing it in 24 lakhs at least on paper. So brilliantly managed, very frugal company, must say so. But with that, maybe we will move forward to the last issue, which is Namo E-Waste. Namo E-Waste की बात करते हैं. Just want to highlight that this issue probably will still need like I'll still have to do some work because this is still slightly far. तो मेरी जो रीड है वो थोड़ी सी प्रीमेच्योर है, बट उसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी लगभग 51 CR रेस करने की कोशिश कर रही है और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज फ्रेश इशू, सॉरी नथिंग ओएफएस. एंड कंपनी जो है उनके शेयर होल्डर प्रमोटर के पास 70% शेयर होल्डिंग रह जाएगी इस आईपीओ के बाद भी, और कंपनी जो है वो अराउंड 194 CR पे आ रही है. सो काफी इंटरेस्टिंग इशू है. जस्ट वांट टू हाईलाइट कि
जो कंपनी का नाम है दैट हैज नथिंग टू डू विथ रिस्पेक्ट टू अ फेमस पर्सनैलिटी. द नेम इन इटसेल्फ, द प्रमोटर अक्षय जैन इज अ जैन पर्सन एंड अकॉर्डिंग एंड ही मेंशन्ड कि जो नेम Namo in Jainism means namaskar, but that's where the name is coming from. But if I talk about the company, जो company है वो basically ना ई वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजेबल एंड रिसाइकलिंग में है. सो ऐसा मान लो आपकी जो कबाड़ी वाला होते हैं उनका जो फॉर्मल वर्जन है, फॉर्मलाइज सेक्टर ऑफ दैट ई वेस्ट है, वो वाले सेक्टर में है कंपनी. एंड जो भी ई वेस्ट होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, लैपटॉप होता है, फोन्स, वॉशिंग मशीन, इन सबको ये कंपनीज कलेक्ट करती है. दे डू नॉट गो होम टू होम सर्विस नहीं है, बट बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, स्कूल्स में कैंपेन्स करते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं एड्स, और उसके अलावा सोसाइटी में पहले से ही वो डालते हैं कि हम 5 दिन बाद आएंगे ई वेस्ट कलेक्ट करने. सो इफ यू हैव एनी ई वेस्ट, bring that e-waste to us and then kind of recycle that e-waste. So it's a formal sector, formal version of a person who used to come and collect junk or kabadi from you per se. Is what this industry is in, and this is a very hot industry. This industry में बहुत tailwind है. very clear from the fact कि अभी तक हमारे यहाँ जो भी industry है, most of it is informal. I don't have the right number, but I will probably think that around 80% of it would be informal. Versus if you look at, let's say, some of the developed countries like US, Europe, वहाँ पे लगभग 90% of all recycling happens through द फॉर्मल चैनल्स पर से. एंड अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास ई वेस्ट रिसाइकलर हैं, जो रिसाइकलर हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, वो अराउंड 100 थे 2018 में, अब वो 700 हो गए हैं. बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सपोर्टिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहा है. जैसे कि ईपीआर एक पॉलिसी है कंपनी गवर्नमेंट की, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें क्या होता है कि जिसने प्लास्टिक बनाया है और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए, अभी उनने एक्सपेंड की अपनी स्कोप ऑफ की एक्सक्यूज पे ईपीआर लगेगा, बट उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिसाइकल द सेम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, ताकि जो अमाउंट इन हो रहा है वर्सेस आउट हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो सके. तो अगर मैं कंपनी की स्पेसिफिक बात करूं तो कंपनी के मेन 3 सेगमेंट है. कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग करती है. उसमें बेसिकली वो ये करते हैं कि जो भी चीज कलेक्ट कर ली उन्होंने, राइट, डिफरेंट सोर्सेज से. एंड अगेन दिस इज नॉट अ डायरेक्ट B2C धंधा जहाँ पे वो हर पर्सन से जाके लेके आए, बट उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स लगाई, स्कूल्स में बात करी, और वहां पे जो मिला वो उनको लेके आते हैं. फिर सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसे हैं जो रिफर्बिश हो सकती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो रिसाइकिल हो सकती हैं. मतलब कि उनको फिर उनमें से जो काम के पार्ट्स हैं बस वो निकालने पड़ेंगे पर से. सो जो रिफर्बिश होंगे उनको रिफर्बिश करते हैं, जैसे लैपटॉप्स वगैरह हो गए, फोन्स वगैरह हो गए. अगर वो उनमें यूजफुल लाइफ बची है तो उनको रिफर्बिश करते हैं, और अगर वो उनमें नहीं बची है तो उनकी बैटरी वगैरह निकाल के रिसाइकलिंग वगैरह करती है कंपनी. और उसके अलावा कंपनी कंसल्टिंग भी करती है, थोड़ा बहुत ईपीआर वगैरह में हेल्प करती है कि आपके इतने टारगेट्स हैं, आपका इतना हम ईपीआर क्रेडिट. सो ईपीआर इज लाइक ग्रीन क्रेडिट्स ओनली, उसमें आपको क्रेडिट्स देती है पैसे. और कंपनी का अगर मैं रिसाइकलिंग का बिजनेस बताऊं तो अराउंड रिसाइकलिंग इज 70%, which would be implied only, क्योंकि जो भी लोग इंडिया में स्पेशली अगर चीज को जंक कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ इट इज कंप्लीटली यूजलेस. तो 70% धंधा रिसाइकलिंग से आता है. 17% जो बिजनेस का धंधा होता है वो उनका जो तुम्हारा रिफर्बिशमेंट होता है, उसमें लैपटॉप वगैरह होते हैं, थोड़े चार्जर वगैरह होते हैं जो हम फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, वो डायरेक्टली दूसरी जगह चल सकते हैं. वो FY24 का धंधा उससे आया था. और उसके अलावा कंपनी का जो रिफर्बिश से अराउंड 12% आया था, और जो कंपनी ईपीआर वगैरह सर्विसेज करती है उससे 17% धंधा आया था. अब मैं अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी के पास 2 मेजर फैक्ट्री है. एक जो है फरीदाबाद में है, और उसके अलावा एक और फैक्ट्री है उनकी हरियाणा में. सो दे हैव अ बिग प्रेजेंस इन दिल्ली NCR एरिया. और उसके अलावा कंपनी ने ना 2013 में एक अपनी सब्सिडी को टेक ओवर भी किया था, एक एक्सटर्नल कंपनी को 2023 में, सॉरी अप्रैल 2023 में एक टेकियो वेस्ट मैनेजमेंट करके कंपनी है, उसको टेक ओवर किया था ताकि उनका नासिक में भी प्रेजेंस बन सके. सो ये कंपनी नासिक बेस्ड है, तो वहां से भी अब काफी कंपैरेटिवली बिजनेस आता है महाराष्ट्र से. तो अगर मैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो अराउंड मोस्ट ऑफ बिजनेसेस दिल्ली NCR ड्रिवन. दिल्ली NCR से अराउंड 60% धंधा आता है, महाराष्ट्र से अराउंड 20% धंधा आता है, और उसके बाद राजस्थान वगैरह से थोड़ा बहुत धंधा आता है, और साउथ ऑफ इंडिया से थोड़ा बहुत धंधा आता है. सो दैट्स व्हाट द कंपनी डज. अब अगर मैं कंपनी की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि कंपनी 51
51 CR रेस करने की कोशिश कर रही है। तो 51 CR में से मोस्ट ऑफ द अमाउंट अराउंड 22 CR जो है वो वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए है, क्योंकि इट्स अ वर्किंग कैपिटल हैवी इंडस्ट्री। क्योंकि आप जब पहले सामान लेके आओगे तो उसका कंपैरेटिवली कस्टमर को डायरेक्ट पैसे दे दोगे, फिर उसके बाद वो धन आप उसको रिसाइकिल या स्क्रैप करके बनाओगे, फिर बेचोगे, तो उसमें वर्किंग कैपिटल लगेगा। और उसके अलावा कंपनी जो है वो लगभग 11 करोड़ रुपए से जो अपनी नासिक वाली यूनिट है उसमें एक नई फैक्ट्री लगा रही है, जिसमें वो लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकिल करेंगे। सो उसके लिए वो प्लांट लगा रहे हैं लगभग 11 करोड़ रुपए से, जिसमें वो बेसिकली अभी तक क्या था उनका कि जो लिथियम आयन बैटरी होती थी ना, उसकी अगर रिसाइकलिंग करनी हो तो वो उनके पास खुद का प्लांट नहीं था, वो बाहर अपने वेंडर्स को भेज देते थे। अब वो उसका कुछ तो प्लांट लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी एबल टू डू दैट एज वेल, सो विच इज अ गुड पार्ट। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी जो है रेवेन्यू कंपैरेटिवली बढ़ ही रहा है। 2022 में कंपनी ने 45 करोड़ किया था, 2023 में 58 CR किया था, और FY24 में फिर जैसे ही उसने वो अपनी नासिक वाली सब्सिडरी को टेक ओवर कर लिया तो उसका भी रेवेन्यू इनमें जुड़ गया, और कंपनी ने अराउंड 101 CR का टॉप लाइन किया है। अराउंड 6% का पैट मार्जिन है कंपनी का। कंपनी ने लगभग 7 करोड़ रुपए का धंधा की पैट बॉटम लाइन शुद्ध मुनाफा किया है, और कंपनी जो है वो अराउंड 194 CR पे आ रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कंपनी जो है अराउंड 29 PE पे अपने आप को वैल्यू कर रही है। अगर आप इसके कंपैरेबल देखोगे तो प्रोबेबली इको वुड बी अ गुड कंपैरेबल विच हैज बीन PE has been offshooting. PE उसका लगभग 94 पे है comparatively. But again, this needs to be seen how, again, I don't have complete understanding of Ecorico right now. So maybe I'll compare it with Ecorico to see कि Ecorico क्या करती है, ये company क्या करती है. And again, this issue is slightly far away. So अभी 100% understanding नहीं है. We'll still have to see how this evolves. But this is a very high level read of Namo E-Waste. अब अगर मैं merchant banker की बात करूं तो हेम सिक्योरिटीज का IPO है. Comparatively good repute of the IPO, Heim Securities का reputation अच्छा है. So that was my read with respect to Namo E-Waste. Rohit, do you have anything to add on that? Honestly, no, man. It is a little far away. So I just listened to a couple of quick interviews of the founder, the promoter. Sounds very, very sharp and very clear about what he's doing and why he's doing it. It's almost like a startup that maybe was not able to raise the VC funds that it wanted, and it is coming to the SME market, which I think that's a great value of a platform like this, through this, where some of these companies, I think India does not have as strong private market setup compared to other countries. So platform like this is allowing even startups like Namo E-Waste to come in this. So I don't have a very strong read on the company, but what little bit I saw, I was quite impressed, at least by the promoter. Got it. Thanks. That's pretty much it in terms of our read of the current companies. एक बार very quickly, let's talk about Bajaj Housing Finance. From what we know, उसमें शेयर होल्डर कोटा है, बट जो शेयर होल्डर कोटा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. बेसिकली उसमें यूजुअली क्या होता है, शेयर होल्डर कोटा ना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, वेयर यू हैव अ हार्ड लिमिट ऑफ अप्लाइंग टिल 2 लाख रुपीज, उसके ऊपर आप नहीं अप्लाई कर सकते हो. बट इसमें क्या है, हार्ड लिमिट नहीं है, यू कैन पुट इन एनी अमाउंट. आई नो द लास्ट इशू विच हैड समथिंग लाइक दिस वाज एरोफ्लेक्स लास्ट ईयर अगस्त में आया था अराउंड द सेम टाइम. उसमें भी ये था कि आप कितना भी पैसा डाल सकते हो. सो इसमें भी यही है. सो हियर आर द 3 legit combinations which will work. Either you 2 legit combinations. What you can do is कि आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या कर सकते हो कि या तो आप अपनी बिग HNI एप्लीकेशन और स्मॉल HNI एप्लीकेशन और रिटेल लगाओ, और उसके साथ आप शेयर होल्डर कोटा लगाओ, बट फिर उसमें आपका 2 लाख रुपए का ही लिमिट है. यहाँ तो मतलब आप अगर 2 लाख रुपए तक का वो लिमिट लगा रहे हो तो आप दूसरी एप्लीकेशन लगाने के लिए भी एलिजिबल हो. बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप एक बड़ी शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा सकते हो जिसका लिमिट इज अप टू 500 CR, बिकॉज दैट इज द शेयर होल्डर कोटा का पोर्टल का टोटल शेयर होल्डर कोटा का टोटल वैल्यू, उतने तक की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो ऊपर से. बट देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एनीथिंग. लाइक जैसे ही आप 2 लाख रुपए से ऊपर लगाओगे तो आप रिटेल के लिए एलिजिबल नहीं हो, बिग HNI स्मॉल HNI आप नहीं लगा सकते हो ऊपर से. सो दैट्स द small thing which we know as of now. Again, this is still a developing story. हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सा addendum file करे and उसमें change आए. So we'll see how it evolves. Again, the issue is with respect to next week. So what we'll do is we'll cover the issue from fundamental aspects as well, कि कंपनी क्या करती है, किस वैल्यूएशन पे आ रही है. मेरे को honestly at this price very high level seems slightly
क्वाइट एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू पीबी, बट हो सकता है कि बजाज का वैल्यू ये इतनी ज्यादा है कि बजाज इतना बड़ा मल्टीपल कमांड कर पाए ओवर द अदर peers. But yeah, that's an interesting company. We'll talk about it next week. Rohit, do you have anything to add, or we can quickly move forward to our guest speaker? Sandeep has joined us and would love to have some of his views on the recent advisory from SEBI on the SME IPOs. Yeah, I'll just say one thing. I think I think it's the first time in a while we're getting an Mainboard IPO where there is a proportional allotment for the HNI/retail category. So there's a lot of unknown, but I would just say think through what scenarios could be, what subscription scenarios you might expect, and just sort of have that, especially for people who apply for listing here, just think through what the scenarios would be and how best to keep your funds ready. So for example, somebody with very high capital, probably the best thing for him to do would be to apply one huge shareholder quota, and if he has other accounts, to apply SHNI or BHNI from those. So just think through those scenarios. We'll probably cover it in more detail next week. Maybe there'll be a better read on what kind of shareholder final subscription could be, whether it be 50x, 100x. Right now, it's all a bit up in the air. But yeah, just be ready, I think, before that, so you're not scrambling at the last minute. Thanks, Rohit. I'm still hoping कि उनमें वो एडेंडम डाल दें और वो हम जैसे रिटेलर उसमें अप्लाई कर पाए जो कि 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन डालते हैं. But yeah, thank you so much for kind of talking about it. If you guys have any questions, feel free to post them in the comments on our timeline and we'll take them. Definitely join next week's primary market chatter as well. That should be interesting.